Now we are going to. Okay, Putija is also joining. We have done nomenclature and isomers. Okay, nomenclature is basically the naming of compounds and identifying. अगर आपके पास compound का नाम है, then what is the structure? So it is basically a link between structure and name. Okay, name से आपको structure आना चाहिए, structure से आपको name आना चाहिए. And we have also done isomers. So we have looked कि अगर आपके पास एक particular molecular formula है, then what are the different structures that it can have? Right? Basically हम लोगों ने यही पढ़ा है अभी तक. Now we are going to do a more important part. बेसिक्स जो होता है वो आपको आना चाहिए. ठीक है, बेसिक्स को आदमी इंपॉर्टेंट नहीं बोलता है, बिकॉज बेसिक्स आना चाहिए. अब एक बात बताइए, क्या 2 का टेबल इंपॉर्टेंट चीज है या बेसिक चीज है? वेयर विल यू क्लासिफाई गाइस, टेल मी. बेसिक 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 चीज है ना. आप कभी भी 2 के टेबल को कोई इंपॉर्टेंट बोलिएगा क्या? टेल मी. नहीं. एक्सेप्शन. एक्सेप्शन 2 का टेबल इंपॉर्टेंट नहीं कोई बोले ना, कि किसी भी क्या किसी एग्जाम में 2 का टेबल आएगा? 11th के नहीं आएगा. लेकिन क्या 11th के बच्चे को 2 का टेबल आना चाहिए? यस सर. है ना, करेक्ट. ठीक है, तो उसी तरह से देयर आर थिंग्स. अब 10th स्टैंडर्ड तक 9th स्टैंडर्ड तक आपके पास क्या थी कि जो टॉपिक 1 होता था वहां से भी आपके पास सवाल आते थे, है ना. लेकिन यू विल सी इन 11th स्टैंडर्ड एंड मोर इन 12th स्टैंडर्ड कि जो चैप्टर का पहला टॉपिक होता है दैट इज बेसिक टॉपिक. वो टॉपिक चाहिए आपको, टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए जो इनिशियल टॉपिक है 5, 6, 7 टॉपिक्स के लिए जो आगे आने होंगे. और 5, 6, 7 टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट. 5, 6, 7 टॉपिक्स के लिए आपको टॉपिक 1 आना चाहिए. ठीक है, सो दैट यू विल सी इन 11th स्टैंडर्ड. यहाँ पे आपके पास कि ऐसा नहीं कि पहला टॉपिक उसी से आपके पास सवाल आने लगे, ऐसा नहीं होगा. इवन इफ व्हेन यू सॉ हाउ वी स्टार्टेड आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, तो उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि किसी भी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि टर्मिनल कार्बन क्या होते हैं. किसी भी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अगर एक कार्बन होता है तो उसको मेथ बोलते हैं या एथ बोलते हैं, है ना. दे विल नॉट आस्क यू व्हाट इज द अनसैचुरेशन एंड राइट हाउ टू रिप्रेजेंट इट. दे विल आस्क यू द आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, बट दीज आर द बेसिक्स. अगर आपको ये नहीं आएगा तो फिर आईयूपैक नेमिंग नहीं आएगी. ठीक है, so, उसी तरह से what we are going to start today, that is organic reaction mechanism. This is the basics of the 12th standard जो आप पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, so see what we are going to learn. Organic reaction mechanism. Organic reaction mechanism. So in organic reaction mechanism, what happens? Basically in chemistry, you have reactants. And reactants से आपको क्या मिलता है? प्रोडक्ट्स मिलता है. पूरा का पूरा 10th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर जो है that is on what chemical equations, chemical reactions and equations, right? तो ये चीज आपने पढ़ी. reactant होता है, प्रोडक्ट होता है. Now in organic chemistry, reactants जो होते हैं उनको 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है. एक को बोला जाता है सबस्ट्रेट. ये टर्म्स है. नाउ दीस टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, जैसे आपने याद किया ना भाई, ABCD आपने समझा है या याद किया? ये बताइए. A से लेके Z तक आपने याद किया है. कोई इसको समझ सकता है क्या? अगर समझे भी तो फायदा है या रटने से फायदा है? समझने से रटने से फायदा ना. तो हाँ, ठीक है. तो ये भी चीज सबस्ट्रेट होता है, रिएक्टेंट. यू हैव टू नो मेमोराइज दीस थिंग्स एंड देयर इज नथिंग बैड इन मेमोराइजेशन. द बेस ऑफ एवरी एजुकेशन इज मेमोराइजेशन. आपको इंग्लिश आती ही नहीं अगर आपको ABCD नहीं आता जो आपने रटा है. आपको मैथ्स आता ही नहीं जब तक आपने 2 से लेकर 9 तक टेबल नहीं रटा होता, है ना. अगर आपको हम 9 into 8 बोले, आप इसको समझ के बहुत ही अच्छे से 9, 9, 9 ऐड करते चले जाएंगे, ये समझना हुआ. ठीक है, लेकिन 8, 9 जा 72 लिखना, ये रटना हुआ. एंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो अगर किसी के मन में कभी आता हो ना कि रटना अच्छा नहीं है, वो प्लीज समझिए बेस जो होता है ना वो रटा ही जाता है. एंड देयर इज नो हार्म, देयर इज नो ब्लेम इन मेमोराइजेशन. ठीक है, चलिए. सो सबस्ट्रेट है एंड देन यू हैव रिएजेंट.
और प्रोडक्ट से पहले एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। When substrate and reagent are reacting, exactly एक particular एक पॉइंट आता है कि वो रिएक्ट जब कर रहे हैं तो उस पॉइंट को बोलते हैं that they are forming intermediate। और फिर इंटरमीडिएट से क्या बनता है आपका, यू हैव प्रोडक्ट्स। प्लीज लिसन, डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है ना, लिखिएगा मत अभी कुछ, ध्यान से सुनिए सर। सबस्ट्रेट, इट इज ऑलवेज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल समझे, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उसमें, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और हो सकता है लेकिन कार्बन हाइड्रोजन जरूर होंगे। रिएजेंट जो होता है इट इज जनरली एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक यानी कार्बन और हाइड्रोजन उसमें नहीं होगा। और इट कैन बी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेकिन हाईली रिएक्टिव, और हाईली रिएक्टिव स्पीशी। ओके, अच्छा दूसरी चीज समझिए यहाँ पे, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए छोटी छोटी चीजें जो आपको ना समझ, अगर आप अभी समझ गए ना फिर बाद में आपको डाउट्स वगैरह नहीं आएंगे यहीं पे, ठीक है। समझिए, ये आपके पास पहला प्रोसेस है, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनना, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट का बनना, ठीक है। आई होप यू नो दैट व्हेन रिएक्शन हैपेंस पहले बॉन्ड टूटेगा तभी नया बॉन्ड बनेगा, करेक्ट है गाइस? जैसे नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है। Yes. हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स टू इंटरमीडिएट व्हाट इज हैपनिंग, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। फ्रॉम रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टूटा तो इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, है ना। देखिए रिएक्टेंट के भी सारे बॉन्ड बने हुए होंगे, देयर विल बी नो ब्रोकन बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट। जैसे ही टूटा बॉन्ड तो इंटरमीडिएट बना, फिर प्रोडक्ट्स जो होंगे उनके भी सारे के सारे बॉन्ड मौजूद होंगे, देयर विल बी ऑल द बॉन्ड्स विल बी प्रेजेंट देयर। ऐसे टूटा हुआ बॉन्ड वहां पे प्रोडक्ट्स में नहीं हो सकता, बिकॉज फिर वो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा, फिर वो आगे जाकर रिएक्ट करने लगेगा, ठीक है। अब ये बताइए इन दोनों प्रोसेस में आपको क्या लगता है, ये जो पहला प्रोसेस दैट इज मोर डिफिकल्ट या फिर सेकंड प्रोसेस जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट है? एनर्जी के पर्सपेक्टिव से सोचिएगा, तोड़ना ज्यादा मुश्किल है, तोड़ना ज्यादा मुश्किल है, या फिर फॉर्मेशन दैट इज मोर बेनिफिशियल, उससे ज्यादा आपकी एनर्जी रिलीज होगी? व्हाट डू यू थिंक गाइस? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, Breaking of तोड़ना, bond is easy. ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज डिफिकल्ट और इजी, क्या बोल रहे थे आके? Difficult. ऋषिता क्या बोल रही है? Easy. लड़ जाइए, आप लोग दोनों लड़ जाइए, चलिए राउंड वन। वाई? ऋषिता एंड आप टेल मी वाई, दोनों दोनों अपने पर्सपेक्टिव्स दें। Sir, Because breaking like of bond needs heat. हाँ हाँ so does ठीक है, formation of bond. क्या क्या ठीक है, चलिए कुछ तो आकिब ने बोला, ऋषिता आप क्या बोल रहे थे, हम नहीं सुन पाए। So does formation of bond. Breaking of bond, you just need a little bit of heat and water, but you need a lot more for formation of the bonds. You need different reactants. नहीं 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 नहीं, एनर्जी की बात करते हैं, है ना। जैसे एक लेवल पे सोचते हैं ना, लाइक यू आर सेइंग ब्रेक, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी, करेक्ट है ऋषिता? Yes, sir. एंड फॉर्म होने के लिए Uh, endothermic energy. नहीं, वो नहीं पूछ रहे हम। जब बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, सो देयर इज सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन, उसको आप तोड़ रहे हो, राइट? करेक्ट, इस हिसाब से सोच सकते हैं ना Yes. ऋषिता। सो Yes, अट्रैक्शन sir. को आप खत्म कर रहे हो, दैट इज मोर डिफिकल्ट। या फिर अट्रैक्शन होना तो इट इज लाइक इट इज अ गुड थिंग ना, बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होगा तब तो एनर्जी विल बी रिलीज ना, उसमें रिक्वायर्ड भी नहीं होगा, बिकॉज बॉन्ड का फॉर्मेशन जब तब होगा जब आपके पास मान लीजिए एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, नेगेटिव ने पॉजिटिव के साथ ऐसे करके बॉन्ड बना लिया, राइट? सो दिस विल बी बॉन्ड, अट्रैक्शन तो ऑटोमेटिकली होगा, इसमें आपको कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं ना। डज इट मेक सेंस? और उस हिसाब से हाँ बताइए अर्षिता, क्यों नहीं? A bit, sir. बिट, अच्छा दूसरे हिसाब से आप ये सोच सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, करेक्ट? Yes, sir. ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ये दिस इज कंफर्म फॉर यू गाइस, आई थिंक नो वन विल डिबेट दिस, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, Yes, sir.
and formation of bond will release energy. Oh, yeah. Make sense now? Yes, sir. ठीक है. अच्छा, यानी कि अच्छा, और एक चीज आप बताइए, एक बहुत ही जेनरिक सवाल है, देखते हैं कितने लोग सही से जवाब देते हैं. लेट अस सपोज यू हैव अ टी-शर्ट, you have a shirt and you have a jeans. ठीक है, आपके पास तीन चीजें हैं. All of them are just washed. T-shirt takes 5 minutes to dry up, shirt takes 10 minutes to dry up, and jeans take 15 minutes to dry up. So in the chat, you will tell me guys in the chat, total time taken to dry all of these three. कितना time लगेगा total इन तीनों को dry करने में? In the chat, please. Okay. Akib has answered. Okay, Rishita. I am waiting for other people, guys. बहुत ही आसान सवाल है ये, तो generic सा सवाल है. Amna, Khadija, Khudeja, please answer, guys, in the chat and send your answers to Salim Raza, not to Learnivio. Okay, Amna, Khadija and Khudeja waiting for you guys. Khadija and Khudeja waiting for you guys. See, अरे यार ऐसे तो खदीजा you were there ना, आपने तो yes sir no sir भी बोला था, आप कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं. Send the answer to Salim. I will wait 10 seconds. Sorry guys. I will wait 10 more seconds and then I will have to inform the team that Khadija is not there in the class. हाँ तो बोलिए तो भाई, आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको धमकी देनी पड़ जाती है. हाँ खदीजा, ऐसे कैसे चलेगा? कितना टाइम लगेगा तीनों को सूखने के लिए? खदीजा, what happened? Write the answer in the chat, please. यार. I don't know. Please. You don't know? अरे भाई, क्यों? Why you don't know? Did you get my question? What did I ask? Not exactly. Not exactly. I'm saying you have t-shirt, shirt, and jeans. T-shirt takes how many minutes to dry up? Tell me. How many minutes? Few minutes, not long. Few minutes. अरे भाई, यहाँ लिखा है हमने ना 5 मिनट. आप you're not attending the class or what? I'm there, just the internet connection is a bit low, so I can't hear each other. What is the solution to this, Khadija? Just ask so I can hear properly. Ask Okay, थोड़ा ऊपर नीचे बोल. Okay. I'm saying t-shirt, it takes 5 minutes, shirt takes 10 minutes, and jeans take 15 minutes. So how much time will be taken in total if I want to dry all of these three things? 30 minutes. 30 minutes. ठीक है ना? ठीक है. अब हम बोलेंगे भाई 15 मिनट ना लगेगा. If you're drying t-shirt, then you put down the shirt. The jeans. So first 5 minutes में you will have the t-shirt done. Next 10 minutes में, next 10 क्या हो? Like then 10 minutes and 15. So the total time taken will be 15 minutes only, right? Now that means if a process is happening, मतलब multiple processes are happening, तो उसमें जो slowest होता है ना, that is more useful. We have to study this part कि jeans को कैसे जल्दी सुखाया जाए. Correct? Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. बोलो भाई. Yes. है ना? Yes, sir. अब इस हिसाब से यहाँ पे सोचिए आप लोग. You guys can think about this case. Obviously, we have seen now that breaking of bond is difficult. So obviously, this is going to be a slower process. And formation of bond is what it is, faster process, right? So we have to more study this intermediate. Please understand, if intermediate is stable, intermediate, all the intermediates are unstable, but instability also have some kind of, will have some kinds of levels now. Student, सारे student होते हैं, right? But students का level होता है.
बुरे लोग होते हैं, लेकिन बुरे लोगों में भी लेवल्स होता है, राइट? Similarly, all the intermediates are unstable, but in those unstable, the one which is most stable, that reaction will be faster. And if we are getting intermediate fastly, then obviously the formation of product will be, this is a fast process, उसके बारे में सोचना ही नहीं है. So what we have to think about the intermediate which is stable, that is most important. Why? Because if we are getting, let us suppose, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, ठीक है ना? Let us suppose we are having some reactant and it is giving intermediate 1, intermediate 2 and intermediate 3, ठीक है? और इससे आपको प्रोडक्ट 1 मिल रहा है, इससे आपको प्रोडक्ट 2 मिल रहा है, and here from here you are getting product 3. Now the stability of intermediate, if we will have to compare this, right? This is going to come too many times. Stability of intermediate जो है, तो let us suppose intermediate 2 is most stable, then intermediate 3, then intermediate 1. Now if second intermediate is most stable, that means this reaction will be very fast, correct है ना? All of you guys are getting my point now? Yes or no, please tell me. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना? Now if the E2 is forming very fastly, तो ये process तो बहुत fast है ही, that means I can say that P2 will be major product, P2 major हो जाएगा. Got it, guys? Yes, sir. है ना? Yes, And sir. then this will be minor, P3 will be minor, and this will be negligible. Make sense, yes or no? So the most amount that we will be getting, the largest amount of P2, उसके बाद जो हमको मिलेगा वो P3 है, उसके बाद जो मिलेगा हमको वो P1 है. You understand why the stability of intermediate is very important now? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. All of you understood this? ठीक है. So you can Yes. write this now. Amna, are you there in the class? Yes, sir. अच्छा ठीक है, आपके जवाब ही नहीं आ रहे, कुछ आप बोल नहीं रही थी, इसलिए हमने पूछ लिया. Raise your hand once you're done writing. Raise your hand once you're done writing. Waiting for Khadija and Khudeja.
Khadija, done? Done, sir. Yes? Okay, fine. Yes. Sorry, yes. Now, please write a few points and hopefully you will read these points while you are revising the notes. वहां पे आपको थोड़ा काम आएगा, ठीक है? Please write what is substrate. Right? The molecule whose carbon atom uh, is involved in new bond formation and is generally an organic molecule. And you write reagent. So this reagent is generally आप इसको the other molecule बोल सकते हैं, substrate के अलावा होगा. If it is 2, then 2, 3 to 3. All of those things will be known as molecule और bracket में हम लिख देते हैं S, ठीक है? Molecules. It is generally inorganic. It is generally inorganic or charged organic molecule, ठीक है? After this, you will write a simple point. Chemical reactions involves breaking and formation of bonds. Since organic molecule has covalent bond, हमारे क्या लिखेगा fission या इसको बोलते हैं breaking. It is also known as cleavage of covalent bond. Covalent bond occurs in organic reaction. Write these 3 points. Raise your hand once you're done. Waiting for Amna, Khadija, and Khudeja.
Khudeja, just waiting for you now. Khudeja is here or not? Khudeja, let me know if you are not written. Now, as we have seen that breaking of bond takes place first, Khudeja is present. So you will understand about the fission of covalent bond or the cleavage of covalent bond. Right? Fission of covalent bond. So please write, there are two types of fission of covalent bond. Okay. Number one is heterolytic cleavage. Okay. What is heterolytic cleavage? Let us see. ध्यान दीजिएगा, no need to write now. Okay, ठीक है. Once you have written heterolytic cleavage, that's it. उसके बाद रुक जाइए please. If you have a bond between A and B और यहाँ पे B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब बॉन्ड टूटेगा, the B is going to take all the electrons. ठीक है. And this arrow is showing the flow of electrons. Electron was in bonds और फिर ये कहाँ चला गया? एटम पे चला गया. So A के पास देखिए, this bond was made by two electron, one was of A and जो दूसरा हमारे पास था, the other electron was from B. But now both the electrons are going to B, तो A को मिल जाएगा positive charge and B will be there with a negative charge. ठीक है, with a negative charge. This will happen if the electronegativity of B is more than A. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. ठीक है, so please write, the more electronegative atom gets both the electron and the other atom gets positive charge. ठीक है, तो ये तो हो रहा है चीज. हेटेरोलिटिक क्लीवेज में व्हाट वी कैन से, हाउ कैन वी डिफाइन? सो वी कैन डिफाइन हेटेरोलिटिक क्लीवेज इज दैट व्हेन द shared pair of electron is taken away by one of the atom. है ना, एक एटम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाता है. Raise your hand once you're done writing. Waiting for Khadija and Khudeja.
Next is homolytic cleavage, and I guess by now you would know कि homolytic cleavage में हो क्या रहा होगा. ठीक है, so please write. Second part is, second type of fission is homolytic cleavage. ठीक है, please write. Both atoms get one electron each. After the breaking of bond. Another point that you have to remember is that it generally happens. This generally happens when both atoms have similar electronegativity and in the presence of heat or light. ठीक है, और ब्रैकेट में हेल्पर हम लिख रहे हैं. दिस हेल्पर इज फॉर यू गाइज टू रिमेंबर. ठीक है, हेल्पर HELPR. Now what is this helper? So helper अगर आपके पास present होगा then you are going to have homolytic cleavage. ये आपको याद रखना. This is again, all of these things are going to be used directly in the 12th standard. ठीक है, इसको ध्यान में रख के आप इन चीजों को पढ़िएगा. ठीक है, so what is this helper? Please see. Let's say you will be having heat. This is the sign for heat. E say there will be electricity. For L you will be having light. Light का मतलब H nu, ऐसे करके डिनोट किया जाता है लाइट को. Then for P you will be having peroxide, hydrogen peroxide, methyl peroxide, any peroxide, and R is radical, any other radical you are having. Now in this case, how the cleavage would occur if you are having a bond between A and B? Now this A will get one electron, तो इसके लिए आधा arrow करते हैं use, and B is getting another electron, तो उसके लिए भी आधा arrow है, not two arrows. And we say that we are having A free radical and B free radical. So this is one electron that is shown on top of AN. ठीक है, raise your hand once you're done writing. Waiting for Amna, Khadija and Khudeja. Just a second, guys. Sorry. यार तुम लोग मेरे लिए दुआ करो भाई, मेरा तबीयत खराब नहीं होना चाहिए अभी. ठीक है, हाँ गाइस, आके रामना, खदीजा, निशिता, Yes, sir. है ना, प्रे फॉर मी, आई एम स्नीजिंग ना. मेरी तबीयत अगर खराब हो गई तो फिर आप लोग को पढ़ाएगा कौन? सर छुट्टी दे दीजिए फिर. क्या फिर छुट्टी दे क्या दीजिए. हम छुट्टी दे दें आप लोगों को?
अभी तो मेरी तबीयत खराब नहीं है, मतलब हम बोल रहे हैं मेरी तबीयत अगर खराब हो गई है ना, तो फिर आप लोग को कौन पढ़ाएगा? तो फिर तभी 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 भी दे दीजिए, अच्छा है ना फिर आप ही के लिए। मेरे लिए अच्छा है? मेरे लिए कैसे अच्छा, बताइए जरा। अभी आराम मिलेगा, आगे ही आराम मिलेगा, फिर अच्छे से पढ़ा पाएंगे। रेस्ट कर सकते हैं सॉरी व्हाट आमना? आप अभी रेस्ट कर सकते हैं, फिर बाद में हम लोग को सही से पढ़ा सकते हैं। अरे हम वो बोल ही नहीं रहे, हम बोल रहे हैं आप लोगों के लिए दुआ करो कि हमको रेस्ट भी नहीं करना पड़े। अभी हम ठीक है, ये तो चीटिंग हो गई। अभी हम ठीक है। ओके, in remarks you will first of all write the electronegativity series. Alhamdulillah, I take very good care of myself only for you guys. मतलब when I take leaves, और वो leaves मेरी generally होते हैं when I am traveling. Otherwise, I take really good care so that I don't have to cancel because I am sick. Electronegativity series के लिए ये याद रखना जरूरी है because you have to know which is more electronegative ना। तो आई थिंक बेसिकली पहले हमने ये पढ़ाया होगा, बट यहाँ पे भी लिख लीजिए, जितनी बार लिखिए इसको ना उतना ही ज्यादा बढ़िया है, इतना इस्तेमाल होगा इसका कि क्या बताए। यू मे रिमेम्बर फोन कॉल ब्रो, इश्क प्यार है। फोन कॉल ब्रो, इश्क प्यार है। और वी गॉट दिस ऑफ फोन, दिस इज यस सर। कॉल ब्रो, इश्क प्यार है। ठीक है, सो this is the electronegativity series. Fluorine is most electronegative than oxygen, than nitrogen, the chlorine, bromine, and so on. Okay. Now, next point is when metals are bonded to carbon, then on cleavage of bond, electron is taken away by carbon. Why? Because metal have a tendency to lose electron. ठीक है ना, metals की tendency, I think ये आपने 10th class में पढ़ा था ना, याद है आप लोग कि नहीं याद है? 10th class में there is a chapter metals and non-metals. First of all, you start learning about the physical properties of metals, non-metals. फिर आप लोग को पढ़ाया जाता है, देखिए physical properties के बेसिस पे distinguish करना is not very good, because in physical properties you will see that metals are conductor of electricity, non-metals are not good conductors of electricity, है ना, but graphite is a good conductor of electricity. फिर उसके बाद आप लोगों को पढ़ाया गया कि chemically we can define metals and non-metals. Chemically metals क्या होते हैं? Metals are those which lose electron, non-metals gain electron. याद आया? अब नहीं याद आया तो आप लोग को अच्छे से पढ़ाया नहीं क्या होगा, ठीक है। चलिए इन 2 पॉइंट्स को लिखिए एंड देन वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज राइट दीज 2 पॉइंट्स। Using the curved arrow notation, show the formation of reactive intermediates when the following covalent bond undergo heterolytic cleavage, है ना। All of you got the question? क्या पूछना चाह रहा है? Yes or no? यस Yes, सर। sir. ठीक है, कीजिए सर। ये बॉन्ड का दिखाना है, ठीक है ना, ये जो इस बॉन्ड का क्लीवेज दिखाना है, इस बॉन्ड का क्लीवेज दिखाना है, और इस बॉन्ड का क्लीवेज। ये हम कर दे क्या आप लोगों के लिए? आई थिंक आई शुड डू दिस फॉर यू गाइस। चलिए ध्यान दीजिए, तो बताइएगा। यू हैव द इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी सीरीज वगैरह आपके पास है। तो फर्स्ट वन, Yes, sir. we have CH3 bonded to sulfur and then CH3, ठीक है।
So even though it is written CH3 bonded to sulfur, you know that hydrogen is not bonded to sulfur, carbon is bonded to sulfur. Correct है guys? सबसे पहली दिक्कत तो ये बच्चों को आती है, and it is understandable, quite and completely understandable. बच्चों को लग सकता है कि 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आर अटैच्ड विद सल्फर, है ना? बोलो भाई हाँ या ना? आमना आकिब Yes. खदीजा खुदैजा, है ना? But it is not like that. I hope all of you know by now that the structure would be something like this कि 3 हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड हैं, and then this carbon is further connected to sulfur, और उसके बाद CH3 है. Right guys, this one please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now you tell me carbon and sulfur में which is more electronegative? Sulfur. Sulfur. सल्फर. तो कौन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा हेटेरोलिटिक क्लीवेज में? Sulfur. Sulfur. सल्फर. सो द एरो वुड लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है. अब इधर आपके पास क्या बचा? यू आर रिमेनिंग विद CH3. तो CH3 will get a positive charge, plus you are remaining with SCH3. This SCH3 will get a negative charge because it got the electron, और electron खींच लिया आपने CH3, that is why it is getting positive charge. Got it guys? Yes or no? Please tell me. Yes. Sir. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, अगला आपके पास सेकेंड नंबर, इट इज CH3 bonded to carbon with triply bonded nitrogen atom. Okay, this is CN ना? CN अगर आपको याद हो, carbon and nitrogen are triply bonded nitrile group में. Okay. Now when this carbon atom is triply bonded to nitrogen, it is having sp hybridized carbon atom, and this CH3 is sp3. Between sp3 and sp is more electronegative because in sp you have 50% s character and 50% there is p character. When you have 50% s character, and यहाँ पे क्या ratio है? Here you are having only 25% of s character and you have 75% of the p character. Okay. What is the difference between 25% s character and 50% s character? Please listen to this very carefully and answer me. S is very near to the nucleus, correct है guys? Yes, sir. S is, Yes. now Sir. if S is nearest to the nucleus और sp में 50% s character है, that means this sp is also what? Nearer to the nucleus rather than sp3. कौन ज्यादा नजदीक होगा, sp3 या sp? sp SP. नजदीक होगा. अगर sp, हाँ, if sp is nearer to the nucleus and nucleus is something that attracts electron, correct है guys? कौन Yes, करता sir. है attract? So Yes. we can Nucleus. say that nucleus, and that means we can say that this sp carbon will be attracting more electron than sp3. बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है. So Yes. here the cleavage will look something like this. CH3 positive प्लस CN नेगेटिव. अब देखिए यहां से ना ये पूरा जो कथा हमने सुनाई ना कि ये ज्यादा नजदीक होता है 50%, 25%, all these things are good and fine if you understand it. बट अगर आप ये समझने के बाद अगर आपको ये याद नहीं रहे that sp carbon is more electronegative than sp3, then ये सारा अंडरस्टैंडिंग आपका वेस्ट जा रहा है. ठीक है. To hold on to this idea, sp is more electronegative than sp3, and then you can now work around why sp is more electronegative. उसके बारे में आप you can always think about it because you know the answer now. वो आपका दिमाग खुद काम करके आपको आंसर बता देगा. What you have to remember is sp is more electronegative than sp3. In next case, we have CH3Cu. इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? CH3 के पास या कॉपर के पास? Copper. Copper. अरे भाई साहब, Carbon. कोई फायदा नहीं है. When metals are bonded to carbon, then on cleavage of bond, electron is taken away by carbon. क्या ही फायदा है पढ़ाने? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरह से. So you'll have CH3 negative and copper will be positive. Please copy this down. Raise your hand once you are done.
Waiting for Amna, Khadija, and Khudeja. Waiting for Amna now. Okay. चलिए देखिए. This is in continuation to the questions that we have done. Okay. Right. What are the intermediates that we will be getting? Right, Hannah? How the bond will break when heterolytic cleavage is taking place, and then you will send the answers on my WhatsApp. Send the answers on my WhatsApp once you are done. No answers till now. Very good, Rishita. Everything is correct. I have sent the answer now. Okay, what about MG1? Amna, MG1 नहीं किया आपने? नहीं आ रहा सर वो MG क्या है बताइए? MG मेटल है ना? ये मैग्नीशियम मैग्नीशियम मेटल होता है ना? पता है ना आपको कि नहीं पता? जी
तो मेटल अगर होता है तो फिर कौन लेके जाता है इलेक्ट्रॉन? CH3। हाँ, फिर कीजिए। खदीजा and खुदीजा, please send your answers. यार आकिब, ये एमजी वाले में कुछ नहीं किया है आपने? Yes, sir. I don't know. मैग्नीशियम मेटल होता है ना यार, डोंट नो का क्या मतलब? ये तो पता होगा ना, मैग्नीशियम मेटल, ये नहीं पता? Yes, sir. पता फिर? यस, खदीजा आपका है नहीं? या खदीजा, वेरी गुड, करेक्ट. So here Br will take the electrons. You have CH3 positive plus Br negative. Here CH3 will take the electrons. We'll have CH3 negative plus Mg positive. Here iodine will take the electrons. We'll be having CH3 positive and I negative. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा. अच्छा, 7th एग्जाम्पल लिख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव CH3 and one more CH3 in the presence of H nu. So this is light, so heterolytic नहीं, homolytic cleavage होगा इस तरह से. You get CH3 free radical and CH3 free radical. इनका नाम क्या क्या होता है? So when you have CH3 positive, it is known as carbocation. ये भी कार्बोकेटायन होते हैं. When you have negative, इसको बोलते हैं कार्ब anion. When both of these are free radicals, इसको बोलते हैं कार्बन फ्री radical. Raise your hand once you done right. Waiting for Khadija and Rashita. Just waiting for Khadija now. Khadija, please raise your hand once you're done. Okay. So these are the 3 reactive intermediates for which you have to study a bit. Please write.
reactive intermediates. So the most frequently that you will be getting is carbocation. Carbocation. So carbocation जो होता है इसके पास 3 bonds होते हैं. It has 3 bonds and a positive charge. 3 bonds का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? Tell me guys. 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो भाई. 3 electrons, 6 electrons. 6 electrons. तो complete octet या incomplete octet? Incomplete octet. Very good. Incomplete octet. ठीक है. तो अगर हम इसके स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, बिकॉज इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरमीडिएट जो ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा ना. दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी. So stability will be inversely proportional to the positive charge. है ना भाई? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना अनस्टेबल मॉलिक्यूल, जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना स्टेबल मॉलिक्यूल. ठीक है. सो दिस इज द स्टेबिलिटी. कब बढ़ेगी? जब पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए? कम हो जाए. दैट मीन्स एनी हाउ यू हैव टू ऐड, वी कैन सी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. क्या मतलब इसका? ध्यान दीजिएगा. If this carbon atom is having some, कोई इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन को देना. जैसे मेटल वगैरह लगा रहेगा तो मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को देना. If it is giving electrons, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं और पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे. तो नेगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज को देगा थोड़ा थोड़ा न्यूट्रलाइज होगा. न्यूट्रलाइज होगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, इसमें लिख लीजिएगा. सो inversely proportional to positive charge, directly proportional to electron donating groups. Second is carbon ion. So carbon ion is also having 3 bonds, but the difference is it is having a lone pair also, and because of this lone pair it is having a negative charge. So it has 3 bonds plus 1 lone pair. Now you can see that it is having 8 electron. 3 bonds में कितने हो गए? 6 electron. एक पेयर में कितना हो गया? 2 electron. So in total it is having 8 electrons. So the octet is complete. Complete octet. So stability will depend on the negative charge. जितना negative charge ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा उतनी कम नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी. सो इन ऑर्डर टू रिमूव द नेगेटिव चार्ज हमको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्पीशीज चाहिए होगी. तो राइट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, AWG. और हम ये भी बोल सकते हैं दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. जैसा कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स. अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाला कोई ग्रुप लगा दे, देन इट इज विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा देगा. बिकॉज नेगेटिव चार्ज निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, एंड पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी. दैट इज व्हाई वी कैन से स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. इज दिस क्लियर? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस, ठीक है. नेक्स्ट थर्ड जो आपके पास दैट इज कार्बन फ्री रेडिकल. प्लीज देखिए ना, इनको ना रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है ना. ये मतलब बहुत जल्दी ही उड़ जाता है दिमागों से. हम एक्सपीरियंस भले समझने में बहुत आसान है, ठीक है, ऑर्गेनिक बहुत आसान, उतनी जल्दी आप भूल भी जाइएगा चीजों को. ठीक है. कार्बन फ्री रेडिकल. तो यहाँ पे आपके पास क्या है? ये 3 बॉन्ड प्लस एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, ऑड इलेक्ट्रॉन. 3 bonds, so you have 6 electrons plus 1 electron, so you have total of 7 electrons. And this is going to be again incomplete octet. Correct, guys? Yes, sir. Yes. और यहाँ पे stability के लिए it will be same as that of carbocation because we are having incomplete octet. तो यहाँ पे stability
is directly proportional to electron donating groups and inversely proportional to electron withdrawing groups. ऐसी इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है इसमें, अगर आप और कम कर देंगे यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दीजिएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. बट इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, वी हैव डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इफ यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स तो इलेक्ट्रॉन उसमें पंप करेगा और फिर वहां पे आपको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो द स्टेबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज. So if you have not written, please write these three reactive intermediates. मेरी आवाज आ रही है ठीक से आप लोगों को? Yes. Yes, sir. Okay, fine. Raise your hand once you're done writing. Waiting for Amna, Khadija, and Rishita. No. अब आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए. First, next thing is that when a reaction will happen, so there will be certain points, certain sites, certain atoms which will be more reactive. जहाँ से bond टूटता है और जहाँ से bond पहले टूटेगा, ठीक है ना? तो those sites are also very important. That how what type of sites we are having. वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है, वैसी चीजें. तो please write reactive sites. Reactive sites that will be in the substrate. So what are these reactive sites? So please write sites or atoms in substrate which have tendency to be attacked by reagent. Okay, which can be attacked by reagent. For example, if you have CH3 which is bonded to Br, then obviously this Br is more electronegative, so it will be pulling electrons from CH3, and this CH3 will be getting a delta positive charge because usse electron nikal liya aapne. So this will become an electron poor site. Electron ki kami hogi. It is an electron poor site, or you can also call it electrophilic. It is electrophilic site, a site which requires electron. इसकी electron की जरूरत है.
then if you are having CH3, oops, sorry, wait a second. You have CH3 that is bonded with some metal like Mg. यहाँ पे metal जो होगा, carbon atom will be pulling electrons from the Mg. So carbon atom के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, delta negative charge, and this will now become a electron rich site. और इनको और क्या बोल सकते हैं आप, you can call this nucleophilic. तो न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक साइट इस वजह से बोल रहे हैं बिकॉज न्यूक्लियस में व्हाट रहता है, क्या रहता है, प्रोटॉन्स रहते हैं, राइट. न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहते हैं एंड इट इज इलेक्ट्रॉन रिच. तो इलेक्ट्रॉन रिच किसकी तरफ जाना जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्रोटॉन्स. सो दिस इज रिएक्टिव साइट. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बेसिक है बिल्कुल, बट अगेन नए टर्म्स है तो यू विल रिवाइज दिस वंस अगेन वंस यू आर डन विद द क्लास. ठीक है, राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन. Waiting for Khadija and Rishita. ठीक है. अच्छा, अब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पुअर साइट है उसके पास दौड़ के कौन आएगा, कार्बन एटम या फिर एक ऐसा केमिकल स्पीशीज विच इज इलेक्ट्रॉन रिच. इलेक्ट्रॉन रिच को अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पुअर, और इलेक्ट्रॉन रिच को कौन अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पुअर, और इलेक्ट्रॉन पुअर को अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन रिच साइट. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट भी इसी तरह से, ये तो सबस्ट्रेट में आपके पास साइट्स होंगी, देन यू विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट व्हिच आर गोइंग टू अटैक ऑन दीस साइट्स. उसके बारे में लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स. ठीक है, so in types of reagent you will be having two types. एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, एक को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल. समझने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग. जैसे फोबिया होता है ना, वैसे फीलिया होता है किसी चीज का. फोबिया होता है डर, और फीलिया होता है मीन इफ यू लाइक दैट थिंग. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन लविंग. अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लविंग है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पुअर होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तभी तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पुअर. सो अगर ये इलेक्ट्रॉन पुअर है तो कहाँ अटैक करेगा, अटैक्स ऑन, बताइए गाइस, अटैक्स ऑन कौन सी साइड में, इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन पुअर साइड में अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक कहाँ पे अटैक करेगा, वेरी गुड, Electron अटैक्स ऑन, rich. वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन रिच साइड. ठीक है, देखिएगा, जनरली दे हैव, generally these have positive charge or incomplete octet. ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, BF3, NO2 पॉजिटिव, CH3C पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O, इस तरह से. ठीक है, Cl पॉजिटिव कैन बी अनदर एग्जाम्पल वगैरह. पॉजिटिव चार्ज या इनकम्प्लीट ऑक्टेट. BF3 में you can see that it is having only 3 bonds. 3 bonds का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम. That is why incomplete octet. Nucleophile is nucleus loving. Next it is electron rich. अगला क्या लिख सकते हैं,
attacks on electron poor site. ठीक है, generally these have negative charge or lone pair electrons. For examples, we can write OH negative, CN negative, SH negative, C2H5O negative, NH3 यहाँ पे लोन पेयर, H2O यहाँ पे लोन पेयर. ठीक है, चलिए. Write this down. Raise your hand once you are done. Guys. Raise your hand once you're done writing. आपके पास done waiting for Amna for the Rishita. आपके अगर आपका हो गया ना, then can you please check the Learnivio app? There will be an assessment on basics of reaction mechanism. ऐसे कुछ assessment होगा. Okay, sir. No, sir, there is no test. Assessment. Test क्या देते हैं? Yeah, sorry, there is no assessment. Okay, ऋषिता वगैरह कोई और चेक करके बताए. Can you please send a No. screenshot? Yes, sir. There's no test. I mean assessment. Send me screenshots. Can you go inside chemistry? Chemistry में जाके देखिए, organic chemistry में शायद. No, sir.